हेलो स्टूडेंट वेलकम्स टू बीरेन्स एकेडमी देख गत काली कौन कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट रो लेटर आसी जो लेटर कौन कि न्यू सर्विस रूल 2025 डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट कथा कही बट पर्टिकुलर किसी पोस्ट को लेकिन मेंशन करा जायछि। तो आम देखिए वीडियो डिस्कसन करबा जो अपकमिंग जो टीचिंग रिक्रुटमेंट हो कि ओईएस हो से एज लिमिट केते रहिबो 32 रहिबो ना से 43 करिवो एज लिमिट 38+5 जिमि थिला। तो सेटा चलिए सेटा आम वीडियो डिस्कसन करवा है। तो ये जमी लिखाई आई एम डायरेक्टेड टू से दैट यूनिफॉर्म स्ट्रक्चरिंग मॉडल फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्रियल कैडर existing under different departments was issued this department resolution letter number 8898 है 8898 जेन डेटेड 15/3/2024 जो पठा जाइतला एटा as per the resolution restructuring of each district ministerial cadre has to be done by the administrative department as per their requirement which is to be approved by G and PG and finance department. Thereafter each department is required to frame separate recruitment rule for each district ministerial cadre to regulate the method of recruitment and condition of service of person appointed in the cadre. तमाने ठीक हुआ जाइए कौन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को पठा जीव। तो सी जो 2024 रे जो सर्विस रूल थिला माने 15/3/2024 जोटा तुम थिला ताकू कौन कि रिस्ट्रक्चर करिया पय को कह जाइए। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट ताकर सर्विस रूल करिवे। So in order to maintain uniformity in the cadre rules, a copy of model service rule is annexed here with there for reference. देखिए कौन अच्छी the respective department are to frame the cadre rule taking this model rule as a reference in making required modification. जहाँ दरकार modification करिवे। The department of the government are also advised to submit the copy of a restructuring order while referring the file seeking छड़ाटा दरकार ने। तो ये जमी कॉपी फॉरवर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जेपीजी डिपार्टमेंट इनफॉरमेशन एडिशनल जेपीजी डिपार्टमेंट लाइब्रेरी 20 कॉपी सीटी जाइए कॉपी फॉरवर्ड टू एआरसेल पीजी डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट टू स्वीप जाइए। देन एटा तो है इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म बाय द प्रोविजन टू आर्टिकल 309 द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एंड प्रोविजन छड़ा एटा दरकार ने शिफ्ट टाइटल कमेंटमेंट दिस रूल एटा तो कौन कार मीनिंग देइछि। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब साल रेफरेंस द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ये जहाँ पे रूल तंगर थिला से अनुसार देछि। पर्सनल डिसेबिलिटी रोची स्पोर्ट्स पर्सन रोची डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी and final accounts exam conducted by the board of revenue year mean the calendar all other word and expression using this rule but the guide is constitution of service the service shall consist of the following post as been decided as per requirement in the junior assistant senior assistant assistant section officer establishment officer and senior establishment officer ये जो सब देइछि ये जो पोस्ट देइछि एटी देखो पार्ट 2 रो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन मेड इन दिस रूल द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन द सर्विस शैल बी मेड बाय द फॉलोइंग मेथड जेमति कोन रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट शैल बी मेड बाय द वे जो जूनियर असिस्टेंट रा कोन कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन थ्रू रो प्रमोशन फ्रॉम अमंग्स द ग्रुप डी एम्प्लॉय जो ग्रुप डी एम्प्लॉय रहले तांकर एग्जाम होबनी तांका भीतर कोन कि प्रमोशन हे जबो जेमति कि appointment to the post of senior assistant assistant section officer establishment officer and senior establishment officer shall be made by way of promotion from amongst the junior assistant senior assistant section officer and establishment officer respectively। तो रिजर्वेशन एटी जिमि देछि जिमि तमरा रिजर्वेशन थिला सेही अनुसार वैकेंसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब shall be made in the accordance with the provision of the Odisha reservation vacancy जा भी थिला एससीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन एंकर जाथला रहतो। तब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखा recruitment as nearly as but not more than 80% of the sanction strength of the junior assistant post in the service shall be filled up by the competitive examination junior assistant post कोन की competitive examination को नहीं किया to be held once in a year by the commission the date on which and the places at which the examination are to be held shall be as decided by the study ये तो सब करिबो द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सब and the standard syllabus subject examination se karibo in the month of January each year the appointment authority shall intimate the existing vacancy and the vacancy likely to occur during the year to be filled by the way of direct recruitment to the commission indicating that in the number of posts belonging to different reserve category as specified under rule number 5 on receipt of the request information the commission shall issue advertising in न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करिवो ये तो सब गला द कमीशन शैल प्रोसेस अपॉइंटमेंट शैल बी मेड एज पर द सिलेक्ट लिस्ट once appointed in the post in a district office a candidate shall not be transferred outside the district office by the appointment authority except for the administration of the public interest।
तो जूनियर असिस्टेंट seeking such transfer must have rendered not less than 3 years continuous regular vacancies available to the district with transfer. तापरे इतना गला provided by to junior assistant district office particular year last paid run the junior assistant ना देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डायरेक्ट रिक्रुटमेंट जो होची ता पई एलिजिबिलिटी डायरेक्ट रिक्रुटमेंट माने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो ता पई कोन दे जेटी a candidate in order to be eligible for direct recruitment must be a citizen of India, have attained the age of 21 years and must not be above the age of 32 years as on the first day of January of the year in which recruitment is made. जो ईयर रिक्रुटमेंट होतबो से ईयर एज कोन की 21 रु स्टार्ट हम 32 जाए देछि प्रोवाइडेड ए देख ए जो देछि हम देखिबा ए जो 32 इयर्स देछि एटा कोन टीचिंग रिक्रुटमेंट रे 30 देख टीचिंग रिक्रुटमेंट जेमिति कि बर्तन एलटीआर हमें देखले कोन 38 प्लस 5 रहला एसएसडी देखले कोन 38 प्लस 5 रहला काहे कि ना ये सब 2024 रे रिक्रुटमेंट एटा आस्तिला पर 2025 रे जो एपर्यंत रिक्रुटमेंट आसी नाही कहना एटा सब 2024 रे एडवर्टाइजमेंट आस्तिला जो अनुसार थिला तो सही अनुसार ताको से माने पकई देले तो एपर्यंत एटा आसीने पर आसिले एटा जणा पड़ियो बट आई होप कि टीचिंग रिक्रुटमेंट क्षेत्र रे एज लिमिट कोन कि बढ़िवा दरकार आ बढ़िबो भी जो 32 अछि या पई कंप्लेन हबो ये निहाती बढ़िबो आगु मते लागुनी 32 रहियो बोली टीचिंग रिक्रुटमेंट रे ये 32 बॉडी की ये कौन हम ना 38 प्लस 5 43 करा जिवो जेमिति कि तमर ओएस हो नेक्स्ट जो पीजीटी आसीची हो तापरे नेक्स्ट रेगुलर हाई स्कूल टीचर हो तो सही क्षेत्र रे एज लिमिट 38 प्लस 5 रहिवार चांसेस अछि ठीक अछि तापरे ये सिमति अछि मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन जा बेटी रहउची तो सही अनुसार मिनिमम क्वालिफिकेशन कोन कैंडिडेट मस्ट हैव +3 इन द आर्ट्स साइंस कॉमर्स और सच अदर क्वालिफिकेशन आर इक्विवेलेंट टू +3 एग्जामिनेशन विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्किल किंतु ये जो सब दउची ना ये पब्लिक जो डिपार्टमेंट रहउची ये मेनली तमर ग्रेजुएशन लेवल जति भी पोस्ट रहउची ये रहला पर पीजी लेवल पोस्ट जो आसीबो ता पई क्वालिफिकेशन कोन जिंदो ओईएस उडे पीजी लेवल पोस्ट ता पई कोन क्वालिफिकेशन रहइबो ता पई कोन एज क्राइटेरिया रहइबो तो से सब कोन की देखा जिबो आगु को सो ये तो थिला एज ही सबुठु बर्तन इंपोर्टेंट मैटर करे तापरे सो ये थिला इन्फॉर्मेशन आई होप इन्फॉर्मेटिव थिबो सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।